Hello students. In last videos we have discussed the structure of heart. We have discussed how blood flow through the heart. In today's video we are going to discuss how blood flow through the heart and how it exerts pressure. It creates a blood pressure, systolic pressure and diastolic pressure. We used to listen blood pressure high hai, blood pressure low hai. So what is that high blood pressure, what is the low blood pressure and how blood pressure is created, that we are going to discuss in this video first. Okay, so today's topic is blood pressure. Again, to discuss the topic of blood pressure, we have to go through the entire structure of heart. So we draw the structure of heart. There are two upper chambers and these upper chambers are called right auricle, left auricle, right ventricle, left ventricle. Here we have tricuspid valve, here we have bicuspid valve. Tricuspid valve and bicuspid valve is a single valve. Tricuspid valve is a one valve. Just the difference is there are three cusps like this, and in bicuspid there are two cusps. And from this right ventricle there is a tube which arises from the right ventricle, that is a pulmonary artery, and from here another artery is arise, that is called aorta. First let's understand what is SA node, what is AV node. On right auricle there is a SA node. You may listen the word pacemaker. Pacemaker, pace क्या होता है? Pace होता है गति, velocity, movement, किसी चीज़ का चलना, किस गति से चलेगा, दैट इज कॉल्ड पेस मेकर. सो पेस मेकर यानी कि हार्ट बीट कैसे बनेगी, हार्ट बीट किस तरह चलेगी, दैट इज डिसाइडेड बाय दिस पेस मेकर, दैट इज नोन एज SA node. SA node means sino-arterial node. Sino-arterial node. Now this sino-arterial node opens at the place where superior vena cava opens. This one is superior vena cava. The place where superior vena cava opens, at that place exactly SA node arise, या वहाँ पर SA node होता है. Now what is the function of SA node? SA node create a impulse. It triggers the impulse for the contraction of auricle. Auricle को सिकोड़ने के लिए, auricle को contract करने के लिए. So auricle can power the blood into ventricle. That SA node sends some impulse. Okay, so that impulse is sent to right auricle as well as to right ventricle. यहाँ भी impulse जाएगा और right auricle में भी impulse जाएगा. So right auricle and left auricle can contract and pour the blood into their respective ventricles. On this septum where this right auricle, this is clear, ठीक है. Generally क्या होता है बच्चों, for any kind of the response we have some stimulus. If fan is on and if you are feeling cold, that cold is a stimulus कि आपको ठंड लग रही है, आप क्या करते हैं, रिस्पॉन्स में फैन ऑफ कर देते हैं. If someone throw light on you, that light is a stimulus and then you blink your eyes, that is a response. In the similar way, to contract or to relax, the heart also needs some impulses, and these impulses are not created by the brain. These impulses are created by not only by the brain, but these impulses are created by this SA node also. So this SA node send the impulse to लेफ्ट ऑरिकल एज वेल एज द राइट ऑरिकल. जब एक बार इम्पल्स चला गया, बट दीज इम्पल्स इज नॉट मोर एनफ टू सेंड द इम्पल्सेस टू वेंट्रिकल, क्योंकि वेंट्रिकल थोड़ा दूर है, इनके लिए इतना भी बहुत दूर है, बहुत नखरे हैं इनके, तो ये इतना नहीं भेज पाएंगे. तो देयर इज वन मोर node that is called AV node. AV node is present on the junction of septum. This is what? This is the interarterial septum.
Interarterial septum means the septum between two atrium, and this one is AV node. AV node क्यों बोला इसको हमने? बच्चों यदि लोकेशन को ठीक से समझते हो ना तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा. AV node, atrioventricular node. Atrioventricular node, the node which is present on the junction of atrium and ventricle. So now this impulse will send to this atrioventricular node. Atrioventricular node will send the impulse through this interventricular septum. What is this? Interventricular septum. Now this impulse will send to interventricular septum, and from here it will divide into right side and the left side and known as bundle of His. His was the name of the scientist. Okay, so it will transmit impulse to right side of the ventricle and the left side of the ventricle. So right side of the ventricle and left side of the ventricle can contract or relax, whatever is required. Here also it will further divide into small fibers, so they can transmit the information to entire ventricle. These small fibers are known as bundle of His. This is known as Purkinje fiber. So Purkinje fiber is the small fiber or the further branches of bundle of His which transmit information to both sides of ventricle. So ventricle can contract and power blood to different parts of the body or to the lungs. From which side it is going, it depends. Okay, यहाँ तक क्लियर होने के बाद में अब आपको एक और चीज समझ गई है. Now who will regulate the opening and closing of tricuspid and bicuspid valve? For that there is a chordae tendineae. Okay, this chordae tendineae. Chordae means cord-like structure and tendineae means tendons which connect bone and muscles. Here it connects tricuspid valve and papillary muscles. So these are chordae means cord-like structure, tendineae from tendons, and it is connected with tricuspid valve. This is a tricuspid valve. Similarly from this side bicuspid valve and papillary muscles. So if I draw the papillary muscles ventricle के bottom से आती है. ये these are called papillary muscles. This region of heart is known as apex region, and this region is known as the base of the heart. Now please listen and watch this area, part of the video very carefully. When this heart will receive blood and when this heart will pour the blood, in both of the condition it will create a pressure that is called diastole and systole. Now what is diastole and what is systole? Diastole is a condition when heart receive blood. Diastole word is from dilation. तब क्या है, हार्ट डायलेट हो रहा है, फैल रहा है, when it is receiving blood. Systole is a condition when the heart pour the blood. S for systole याद करने के लिए आसान है. S for systole, S for सिकुड़ना. D for diastole, D for dilate होना, फैलना. So there are two pressure. One is diastolic pressure and one is systolic pressure. When atrium will receive blood, then atrium will dilate, फैल जाएगा. To collect the blood, that is called atrial diastolic condition. When atrium will contract to power the blood into right ventricle,
That condition is known as atrial systole condition. When heart will flow from here to different parts, I mean here from here to lungs, then ventricle will come in systolic condition, and that is called ventricular systole. So by this way we can understand different types of pressure, how exerted in heart. Before that, let's understand what is diastolic pressure and what is systolic pressure. Diastolic pressure is the pressure which is created at the time of diastole condition or dilation. यानी कि हार्ट चैम्बर जब डायलेट कंडीशन में जब फैला हुआ है तब जो प्रेशर है दैट इज कॉल्ड डायस्टोलिक प्रेशर. सो डायस्टोल एंड सिस्टोल. Systole when heart chamber contract, and diastole when it is dilate or when it is in a relaxation stage. By one diastolic, how a beat is created? जब ब्लड यहाँ पर आया, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से ब्लड कहाँ गया? लंग्स में गया, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, and it enters back through pulmonary vein, come back here in left ventricle, and from here it pass through aorta. ये aorta से बाहर चला गया. This is the complete one heartbeat. How many total heartbeat we have? We have total heartbeat 72 beats per minute. In 1 minute 72 टाइम्स ब्लड आएगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से लंग्स, लंग्स से वापस यहाँ, फिर बॉडी में. ऐसा 1 मिनट में 72 बारी होगा. डायस्टोलिक के टाइम पे इट विल रिसीव ब्लड और सिस्टोलिक के टाइम पे इट विल रिलीज ब्लड. आपको ध्यान से ये पढ़ना है कि आई एम टॉकिंग अबाउट ऑट्रियल सिस्टोल और आई एम टॉकिंग अबाउट वेंट्रिकुलर सिस्टोल. नाउ लिसन वेरी केयरफुली. 72 बीट्स पर मिनट मतलब 1 मिनट में 72 टाइम आपका ब्लड, आपका हार्ट धड़क रहा है, या 72 बीट्स हैं. तो व्हाट इज द टाइमिंग फॉर 1 बीट? 72 फॉर 60 सेकेंड्स. So time for 1 beat is equals to 60 by 72, that is 0.8 second. सोच के देखिए कितना काम करना है आपके हार्ट को, और आप आराम से, यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ योर हार्ट मेनी ऑफ द टाइम्स. मेनी ऑफ अस वी आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ द हार्ट. इट्स रियली वर्क हार्ड. ओके, सो 0.8 सेकेंड दे आर टेकिंग टू फॉर द इंटायर प्रोसेस. ब्लड का आना जाना सब कुछ मिला के इसमें टाइम कितना लगता है? 0.8 सेकेंड का टाइम लगता है. नाउ हाउ 0.8 सेकेंड इज डिवाइडेड? ओके, फर्स्ट इज ऑट्रियल सिस्टोल, यानी कि ऑट्रियल सिस्टोल विल रिमेन इन 0.1 सेकेंड. ऑट्रियम का जो सिस्टोलिक कंडीशन है वो 0.1 सेकेंड के लिए है. तो बाकी 0.7 सेकेंड ऑट्रियल क्या करेगा? डायस्टोल में रहेगा. ऑट्रियल सिस्टोल डायस्टोल फॉर 0.7 सेकेंड. सिमिलरली ऑट्रियल हमारा डायस्टोल हो गया. वेंट्रिकुलर सिस्टोल फॉर 0.3 सेकेंड एंड वेंट्रिकुलर डायस्टोल for 0.5 second. Okay, now listen carefully. Atrial systole is for 0.1 second and ventricular systole is for 0.3 second. Total systolic time कितना हुआ? Total systolic time कितना हुआ? देखिए 0.1 second for atrial systole.
0.3 second ventricular systole. So anyhow, for 0.4 second, heart is in systolic condition. Now, how much time is left? 0.4 second. For another 0.4 second, entire heart will be in diastolic condition, both atrium as well as ventricle, and that is called joint diastole. Why it is called joint diastole? Because during this time, atrium as well as ventricle both are in diastolic condition. So we used to say, अभी हम थोड़ा शिकायत करे थे, अभी हम नहीं शिकायत करेंगे. We used to say कि heart work continuously to the entire life. Yes, it works continuously to the entire life, but ऐसा नहीं है. रिलैक्स वो भी करता है. हर 1 मिनट में 0.4 सेकेंड के लिए हार्ट रिलैक्स करता है. So what is atrial systole and what is a systolic pressure and what is a diastolic pressure? The pressure we used to say, हाँ प्रेशर है 120 और 80 का रेंज होता है. 120 इज अ सिस्टोलिक प्रेशर. सिस्टोलिक प्रेशर ज़्यादा होता है क्योंकि आपको जब ब्लड बाहर भेजना है तो उसके लिए प्रेशर हाई रिक्वायर्ड है. एंड डायस्टोलिक प्रेशर इज कंपैरेटिवली लेस, क्योंकि जब रिसीव करना है तो प्रेशर कंपैरेटिवली कम है. क्योंकि देखिए जब ये रिसीव कर रहा है तो ब्लड सीधे यहाँ आना ही है. सिस्टोलिक प्रेशर में व्हेन वेंट्रिकुलर हैज टू सिस्टोल, it has to send blood to lungs. It needs some pressure against the gravity, and this left ventricle, it requires a very high pressure because it has to send the blood to the entire body and moreover against the gravity. तो इसका तो प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है. तो जो हम जनरली बात करते हैं ब्लड प्रेशर की, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर की, सिस्टोलिक प्रेशर इज अराउंड 120 mm of Hg and diastolic pressure is 80 mm of Hg. रिवाइज दिस टॉपिक. ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखिए, हार्ट पे काम करिए और हार्ट से काम करिए. टिल देन टेक केयर, गुड बाय. इन नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स. ओके, बाय.